ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चित्तदेशतारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासुर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. So today is the from the North Indian calendar, Bengal, I think UP, not even Gujarat. Gujarat also starts their Shravan Mas from the Amavasya. Even we South Indian also start from Amavasya only. But some parts, like in Mumbai, I think they start from today, where Babulnath temple will be crowded with people, Shravan Mas. Like, and this time the Shravan Mas is coming for 2 months after 18 years. I'm planning to write because some or other, whether non-practicing Hindus or practicing spiritualist Hindus have no connection with the the month, the name of the month. You know, every month is connected to Prakriti when you see it from our Panchanga. Like one great poet, Kannada poet Dara Bendre used to say, the month of Sravana is connected to, Shravana Mas is connected to Shravana. Because even from a practical purpose, the Chaturmasa begins, lot of upanyasa starts, lot of hearing happens. All the soldiers, they stop going to their mohim. In Marathi they call it as mohim. That stops. Lord Ramachandra, if you all remember, even he was missing Mother Sita, but by the surrounding, in those times the Vatavaran, the environment was so densely, forest, right? The path would naturally close down because of the water. So the emergency could not change the surrounding. Imagine it is like you have lost your wife, right? And she is not anybody. And Hanumanji has the power, Lord Rama has the power. But still submitting to the nature is an extremely, vital for civilization to move forward. सब शांत हो जाएगा. Lord Ram goes to that Malyavant Parvat, most beautiful place, and the temple is there, and it sits there for 2 months because the heavy rains will be there. After 2 months, it starts moving forward. Sends Hanumanji. Of course, first Lakshman comes, but the whole principle of imagine जो सहनशीलता और आलस्य apparently looks the same. आलस्य में कोई सोच नहीं है. सहनशीलता में, in सहनशीलता, there is some kind of, you have to achieve something, but still you are waiting. Like other day we were discussing, I'll come to the subject of, our Gita, applied science, Bhagavad Gita. If you study that the modern world is all about achieving as early as possible. Yoga, like somebody was mentioning
that yoga has turned out to be gymnastic where I get things done. I need to get it things done. I did my 108 Surya Namaskar. I did my Sarvangasana. I did my pranayam. तो एक एक और एक another task which I need to complete. तो ये हार्ट पे खुलेगा नहीं, हार्ट पे लोड देगा. Like one of our devotee Madhvacharya Prabhu had, I think, stent, one mild heart attack, right? तो कब से योगा कर रहा है. परंतु some teacher when I had gone to Pune, connected to a younger yoga, what I learned from there, slow down. Slow down doesn't mean that you don't do anything. योग यानी कि आप अपने ब्रेथ को प्राण में परिवर्तित करते हुए शरीर को हर एक भाग में उसके स्पीड में, उसके गति में, दुर्गति नहीं होना चाहिए और धीमी गति नहीं होना चाहिए. एक अप्रोप्रिएट गति से जब श्वास प्राण में परिवर्तित होकर हर एक अंग में जाता है, goes into the every limb of the body, because it is not vayu going, it is prana going, it revitalizes your entire energy system. Therefore they had this one asana for a long time, Iyengar Yoga. When I had seen him first time and I had gone to give him Maharaj's book, Journey Home, so I went to give, his secretary was there, they allowed. So BK Iyengar ji was doing yoga, Shirshasan, for almost like 10 to 12 minutes. हर एक योग एक ध्यान का कारण बन जाता था. तो एक ब्रीदिंग का एक ये हो जाता था. इसलिए सर्वाइव टिल द एज ऑफ 94, having the internal body organ of a person who is 28 year old. उनके सेक्रेटरी से मैं जब बात कर रहा था, he was saying that, right? So therefore the श्रवण मंत्र है, ये श्रवण करने के लिए अपने गति को थोड़ा कम करने के लिए, right? So but our whole 12 months what we practice has no variety only, right? न हम प्रकृति को देखते हैं, न प्रकृति का अनुभव करते हैं. We just go by this English calendar, which is only name, but life is all यांत्रिक. यानी कि अगर अपने नाम देखो, मास देखो, नक्षत्र देखो, सूर्य जहां प्रवेश कर रहा है, आई थिंक द when सूर्य प्रवेश करते हैं मेष लग्न में, वहां साउथ में श्रवण मास की शुरुआत होती है अमावस्या के समय, right? So there is whole change in the atmosphere, change in the food habits, change in your behavior. मतलब हर एक महीना, इसलिए सूर्य का there are 12 suns, right? इसलिए 12 सूर्य के नाम है. Each 2 hours the name of sun god changes. I think that also applies for every month. यानी कि वही सूर्य का एक अलग फ्लेवर हो जाता है. जो सेंसिटिव है उसको समझ पाएगा, जो सेंसिटिव नहीं है वो समझ नहीं पाएगा. तो वही तो नास्तिकता चालू हो जाती है. इसीलिए अदर डे कृष्ण किशोर प्रभु वाज सेंडिंग समथिंग अबाउट the conflict between bhakti yoga and karma yoga. He doesn't see any conflict, and certainly there is no conflict, neither Krishna says. But somehow or other there is, especially this is in the area of where people practice exclusive bhakti, they have a technical reality को, no, डिवोशनल रियलिटी को टेक्निकल रियलिटी में कन्वर्ट करके भक्ति और कर्म योग का
एक अंतर दिखाई देता, करते दिखाने के लिए प्रयास करते हैं, राइट. The word yoga has been used in the Bhagavad Gita, right? Krishna uses that word for bhakti yoga, uses for ashtanga yoga, uses for karma yoga, uses for dhyana yoga also. And if you study carefully, आप श्लोक से श्लोक, श्लोक से श्लोक, श्लोक से श्लोक जाओगे, then you'll realize actually they are all puraka for each other. They are all integrated with each other. इंटीग्रेशन करने के लिए मूल क्या, योग मूल है ना. योग इज अ कॉमन फैक्टर, भक्ति इज उसका एक एक ब्रांच है, फिर अष्टांग एक ब्रांच है. पेड़ तो सही है, एक ही पेड़ है. दे कैनॉट सस्टेन without the other. This is a technical reality. When you are saturated, your karma yoga is saturated with the feeling of Krishna. Your jnana is saturated with feeling of Krishna. Your ashtanga is saturated with feeling of Krishna. Of course, you are practicing bhakti. Then there is the feeling, oh, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कृष्ण में लीन हो गया. I am totally lost in Krishna. That is the mood of a practicing person, but technically still it remains the harmony between action, intellect, feeling, and basically rhythm. For me, rhythm is ashtanga yoga. Yeah, rhythm hai. Therefore, Bhagavad Gita is an applied science touching all the faculty of the human existence. Other day, Hare Krishna was asking, aims, Rishikesh, they want to start a Gita and teach Bhagavad Gita to the student in such a way that if you're doing a Gita throughout the year like a subject, they want to study the change in the behavior, in the psychology of the student. I said, फंस गए तुम लोग. What will you teach them? So what were they planning to teach? They're planning to teach वही घिसा पिटा जो गीता कोर्स है, wherein you want to convert people to become a devotee. But when you go to a college, right, are you giving them the wholesome understanding of Bhagavad Gita? मैं घिसा पिटा इसलिए बोल रहा हूँ कि somebody, when I was in Ahmedabad, I went to visit one friend who is in IIM Ahmedabad. So they also have a specially designed Gita taught by a professor to the level of who has the potential of becoming a director also. वो पढ़ाते हैं गीता. I met him also, right? And our devotee friend said, he had invited one Delhi devotee. So he started giving the 6 session course for the IIM students. उनका उद्देश्य नहीं है कि मुझे कृष्ण भक्त बनना है, उनका उद्देश्य है को गीता को समझना है. गीता में कृष्ण भक्त बनना ये अर्जुन का चॉइस है. अगर मैं बनना नहीं चाहता हूं कृष्ण भक्त, फिर भी मैं गीता का पालन कर सकता हूं, बिकॉज कृष्णा ओनली सेइंग दैट. सो व्हाट हैपेंस फॉर ज्ञानोत्तर भक्ति, जिसके पास ज्ञानोत्तर भक्ति नहीं है, ही ओनली सीज कृष्णा एज अ केवल एक फिगर के रूप में, एक मूर्ति के रूप में, एक केवल व्यक्ति के रूप में देखते हैं. And what is that Vyakti means? I will connect to Krishna's deity. I will connect to Krishna's land Vrindavan. I will connect to someone looks like Krishna's devotee, जो तिलक धारण किया हुआ है, कंठी है, जो looks like, who is called as, this person is known as a Vaishnava, a Krishna Bhakta, right? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. It is very much required. But in focusing artificially on the Krishna Murti,
we seldom study Krishna Tattva. Now, Krishna Tattva is extremely important because Krishna Tattva में है कृष्ण का व्यक्तित्व व्यक्ति भी है. If you minimize Krishna's personality based upon what you feel that Krishna should look like this only, the Kanti should look like this only, like Bhakti Vinod Thakur said, Bharagrahi ya Bharavahi rather than Saragrahi. Saragrahi is the Krishna Tattva. Bharavahi is the superficial Krishna Murti. मैं उसको विग्रह भी नहीं बोल रहा हूँ. Right. So therefore, no, there is a conflict about this. Ki anything which has Krishna Tattva, but not like we have discussed this before. The 12th chapter of the Bhagavad Gita is called as Bhakti Yoga. लेकिन कितने लोग वहां से भक्ति योग को चालू करते हैं? Right. We don't see the foundation of bhakti as prescribed by Krishna himself. Right. We jump into what Vishwanath Chakravarti Thakur said, what the Babaji of Vrindavan said. उधर चले जाते. अगर इसको छोड़ के उधर जाओगे तो निश्चित रूप से there would be certain challenges in regards to going deeper into Krishna Tattva. So भगवान कृष्ण में गीता में दो प्रकार के प्रिंसिपल को दिया हुआ है. द एंटायर गीता फोकसेस ऑन तत्व, प्रकृति, प्रकृति के नियम, the nuances of how Prakriti operates, how one should operate based upon as it is Prakriti. And the second aspect of Bhagavad Gita, being a devotee, Arjuna, Krishna also talks about Jiva's, direct pratyaksha sambandha with Bhagavan. Imagine if somebody, not that they don't want to, they may be devotees of Lord Shiva, but read Bhagavad Gita. Is it possible? Very much possible. बहुत पॉसिबिलिटी है, क्योंकि गीता जीवन से, गीता इज कनेक्टेड टू लाइफ. विद इन लाइफ देयर इज अध्यात्म. एकत्वेन पृथक्त्वेन. वी हैव टू अगेन टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ Krishna's personality, we have to understand Krishna Tattva. Therefore, as Bhagavatam explains, what is yoga means? Yoga means basically dharma plus kriya is equal to yoga. इसको हम लोग देखते नहीं क्योंकि इसमें ये धर्म के 13 पत्नियां दक्ष प्रजापति के जो पुत्री है उतना ही, बट उसके पीछे बहुत बड़ा गहरा विज्ञान है. धर्म एंड क्रिया. जब धर्म और क्रिया का विवाह होता है उसका परिणाम योग के रूप में जन्म लेगा, योग नाम. एंड व्हाट इज योगा? क्रिया which is धार्मिक, which is judicious, which is प्रकृति के साथ में जुड़ा हुआ. Therefore in the Bhakti Rasamrita Sindhu, Prabhupada talks about bhakti is not a feeling. Bhakti is not only feeling. Bhakti means anushilanam. Bhakti Rakshak Mother Sridhar Maharaj talked about Anushilana Samiti. In Bengal, the nationalist and the loyalist, the Congress was loyalist, trying to pacify Britishers and through that maybe gain independence. But this extremist is not real word, nationalist, they had this Anushilanam.
Bankim Chandra Chatterjee, then Arvind Ghosh ji, Subhash Chandra Bose, right, Veer Savarkar, Lala Lajpat Rai. These are all called as nationalists. There is a book that revolutionary. People should read it to understand, the Indian psyche, how Indian psyche operates. तो इसीलिए अनुशीलनम एक्शन, इट इज नॉट फीलिंग अलोन but active engagement. Therefore, even if you call yourself as a exclusive bhakti yogi, फिर भी आपको लगे ना केवल आप क्रिया से मुक्त नहीं हो सकते हो, right? When we are defining that in bhakti, it is, there is no tinge of karma, there is no tinge of jnana, there is no tinge of dhyana. That is means that it is not bereft of jnana yoga, ashtanga yoga, karma yoga. केवल कर्म नहीं है, वो योग, हर एक चीज योग में परिवर्तित हो जाता है, राइट? So that's an important. इसलिए other day I was telling to young people, business people, I said हर रोज ना 10 लोग भगवत गीता का पानी पीते हैं ना, वैसा आस्वादन करने के लिए, नॉट गेट इट डन। अरे मैंने, मेरा ना आज 8 चैप्टर का अभी श्रावण मास में करते हैं, राइट? बट इफ यू कैन हेल्प पीपल टू कनेक्ट विद द वर्स ऑन देयर ओन, फैसिलिटेट, राइट? सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि। ये श्लोक को खोल के देखो, ये उपनिषद का श्लोक है जहां गुरु और शिष्य दोनों मिलकर, हाँ, वो ज्ञान की धारा के साथ में आश्रय लेकर गुरु शिष्य को समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और समझाने में कई प्रश्न खड़े होंगे। द स्टूडेंट विल रेज क्वेश्चंस, and those very question which is raised by the student becomes the a knowledge receiving for the guru also. कई गुह्य सूत्र खुल जाएंगे गुरु के लिए। He said, wow, you asked this question, makes so much of sense, because उसके प्रश्न में एक उत्तर छिपा होगा। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम, उस दृष्टिकोण से देखने से। Therefore, to avoid that कृष्ण मूर्ति, जो मूर्ति, जयपुर में जाके मूर्ति खरीद लाना एक कृष्ण तत्व को समझना नहीं है, ये भावनात्मक है, ये सेंटिमेंट्स है। It is one aspect of your devotion, but if it is only focused on sentiment, then naturally Shruti Smriti Puranadi Pancharatrik Vidim Vina Aikantika Harer Bhaktiv Utpathi Macha Dega. Right. So therefore it is dharma, it is kriya, and it is the yoga which gives rise to, right? So therefore the bhakti exclusivist, this is my perception, when you again जैसे मंथ के बारे में बता, like if you go and talk to some of the most of proper disciples in regards to what is Shravan connected to, what is Ashwini connected to, what is Bhadrapad connected to, the month, only one month they will recollect the mantra of Kartik. मार्गशीर्ष को भी नहीं समझेंगे। Nothing, no, we are not saying गलती है कुछ है, because that is the bandwidth they have been given. वैष्णवता है, परंतु जो वैष्णवता में एक एक निष्ठा आती है ना कि यही सत्य और इसके अलावा जो भी वो गलत है, that exclusivity becomes a dangerous for the growth of sanskaras. Like other day one devotee came and his cousins have taken संध्यावन। मैंने उसको पिताजी के पूछा कि तुम बच्चे का संध्या वंदन क्यों नहीं, उसका उपनयन कर रहे? बोला प्रभु जी डायरेक्टली महाराज से लेंगे दीक्षा के बाद।
बोला वो तो साधना है, ये तो संस्कार है। तो डॉक्टर है और दिमाग नहीं क्या तेरे पास? आई नो हिम सिंस बिगिनिंग, सो फ्रेंडली आई सेड। he said साधना और संस्कार में अंतर होता है। संस्कार आध्यात्मिक गुरु आशीर्वाद देते हैं, परंतु वो स्वयं होकर उसमें भाग नहीं लेते। ये परिवार का उत्तरदायित्व है। यू नो, सो देयरफॉर गायत्री पहले मिल जाता था। आप जो आपके जो निष्ठ मंत्र है, आपको जो गुह्य मंत्र है, जो आपका जो निज मंत्र है, जो कृष्ण से संबंधित है या फिर गोपाल से संबंधित है या फिर जगन्नाथ जी से संबंधित है, जो भी है, दैट्स अ गुप्त मंत्र दैट यू चूज एंड गुरु विल गिव यू दीक्षा। देन ही कैन ऑल्सो ऐड, ऐसे तीन चार मंत्र दिया जाता था। ओके, आई सेड आई डिडंट गेट इनटू ऑल द डिटेल्स, आई एम जस्ट टेलिंग। आई सेड संस्कार और साधना का साथ में, so the word itself defines, you don't have to, you don't have, and then if you have to you can study also। ये पुरातन परंपरा से आया हुआ है। जब से सृष्टि बनी, at some point of time the rishis conceived this idea कि विद्या को स्वीकार करने के लिए गायत्री से जुड़ना होगा। तो वो संस्कार करते करते वो संस्कार उसका साधना का एक अंग बन जाता है। he become a sadhaka, right? You can't just cancel all this, or even if you said according to time, place, circumstances, right? Prabhupada gave according to time, place, circumstances, because how much can you tell to the Western people? And then he talked about applying Varnashram Dharma. Varnashram Dharma can only become Varnashram Dharma not because you start a farm community without electricity, राइट? ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी का जो फार्म है, केवल आदिवासियों के लिए, उनको भी बदल रहा है, बिकॉज दे हैव द हैबिट। अगर आप बॉम्बे के आदमी को उधर रखोगे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, वो मर मर के अपने आप को गुरु का गया है, गुरु का गया है, गुरु का गया है, गुरु का गया है, बट वो कंडीशन नहीं है, वो टिकेगा नहीं। आज तक 99% of the farm community who considered a varnashram means no electricity, वो लोग इतने जोर से मार खाए हुए हैं ना, they will not rise only, right? So therefore ये समझना कि हाँ, एक एक गीता में आता है ना, 11वें अध्याय में, शाश्वत धर्म गोप्तृत्व। ये शाश्वत धर्म क्या है? व्हाट इज शाश्वत धर्म? इज देयर अशाश्वत धर्म ऑल्सो? यू नो, Dr. Naranacharya was explaining when Arjuna saw the Vishwarup form. The beauty of Vishwarup form is it it actually encompasses all ekatvena also and pratatvena also. वो रूप में आपको अलग अलग भगवान के, ईश्वर के अलग अलग अंग है, वो भी उसमें है, और वहां जो आपका जो एक्सक्लूसिव वो भी उसमें है। एंड he said the beauty that Krishna is saying शाश्वत धर्म, क्योंकि धर्म के कई पहलू है। देर आर सर्टन एस्पेक्ट ऑफ धर्म, देर इटर्नल रियलिटी, देर आर सर्टन एस्पेक्ट ऑफ धर्म, देर टाइम बाउंड रियलिटी। इसलिए हमारे ऋषियों ने, जब कोई भी आप संकल्पना करके पूजा करते हो, हाउ डू यू स्टार्ट? यू बिगिन विथ मनवंतरा। विच मनवंतरा? Vaivaswan, right? And then what do you talk? Kali Yuge. Then Pratama Sandhyaye, Kali Yuga Pratham Sandhya. Then you talk about Bharat Kande, Bharata Varshe, right? Then you talk about Muhurta, then you talk about Masa, then you talk about year. So there is a Kala which is eternality, but Kal का जो भाग है ना, आज इस कलयुग में, इस ऋतु में, इस मास में,
He says, our whole rishis have warning us, हमको एकाग्रत करना चाहते हैं अपना काल स्थिति, काल टाइम सरकमस्टेंसेस को लेकर ही आपको सब कुछ करना है। राइट? एक राजा जब पिंड दान देता है, वो बहुत बड़ा पिंड दान दे सकता है, लेकिन एक भिखारी गरीब है, उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, एक चावल का दाना भी दे सकता है वो। पर्याय, नो पर्याय, इसलिए वो शाश्वत धर्म गोप is one is a permanent principle and the permanent principle of flexibility। हाँ, उसको छोड़कर अगर मैं कुछ भी करने के लिए प्रयास करूं तो उसका क्या होगा, दुष्परिणाम हो गया। सो देयरफॉर इट्स एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल टू अंडरस्टैंड दैट काल परिस्थिति विषय के अनुसार टाइमिंग होता है ना क्रिकेट में, इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग, स्पेशली इन द टेस्ट मैच। यू नो वन प्लेज अ लॉन्गर इनिंग्स, फिर वो टाइमिंग के साथ में खेलता रहता है, तो दे स्टे, दे सर्वाइव, दे ग्रो। राइट? अगर आप किसी भी टेस्ट प्लेयर से पूछो, आपका जो T20 वाला सेंचुरी, आपका जो वनडे वाला सेंचुरी और आपका टेस्ट सेंचुरी, किसके ऊपर आप ज्यादा जोर दोगे? यू नो वो नेचुरली बोलेगा बाबा टेस्ट तो टेस्ट ही होता है। राइट? सो बिकॉज उसमें बहुत सारे पहलू होते हैं। तो सिमिलरली ये जो कृष्ण तत्व है ना, इसको समझाना, इसको समझना become extremely important. So I was telling Hare Krishna Prabhu, I said by teaching 7 days जो गीता कोर्स है, कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है, बल्कि वो बोलेंगे अरे इनको तो क्या है, लोग ने पूरा इधर बना, उनके जीवन में, उनके साइकोलॉजिकल रियलिटी में, उनको मेंटल रियलिटी, हाउ मेनी विल बिकम डिवोटीज? अगर 50 लोगों ने सुना, कितने लोग डिवोटी बने? परंतु अगर 40-50 लोगों ने सुना, if you make it as an applied principle of Bhagavad Gita, then larger number of people will try even as a research. And what are the components of trying? You have to use certain elements of Jnana Yoga. I said, आप जब भी rhythm की बात करो, he said there has to be rhythm in your life. Try doing this rhythm. That is Ashtanga Yoga. Try learning certain wisdom. That is the Gita classes. Based upon that, try to make your entire study into Karma Yoga. Teach them the science of how to make everything is connected to divinity only, Karma Yoga. And then without bhava, without devotion, without feeling, वो एक नवीनता जो आती है वो फीलिंग से आती है। अगर वो फीलिंग ही नहीं है, फिर वो यांत्रिक बन जाता है। The material world is not defined as it is not defined through the principle of a machine. It is defined through the principle of Rita. It is defined to the principle of Satya. तो उस प्रकार से करने से क्या होगा? Then they can actually see, अरे क्या क्या परिवर्तन आ रहा है। युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टसु कर्मसु। Then I said, okay, ये तो बहुत जबरदस्त विषय है, अप्लाइड भगवत गीता, जहां आप एक्चुअली इसको इस प्रकार से, अभी क्या हो गया, भगवत गीता एक ग्रंथ केवल फिलोसफी के चर्चा करने के, चलो आज प्लेटो को पढ़ लेते हैं। आई जस्ट गॉट द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, 11 वॉल्यूम का किताब है, बड़ा बड़ा एकदम ह्यूज, रिटन बाय विल डोरेंट। अभी क्या हो गया उसको, अदर देन यू आर अ प्रोफेसर, पीपल डोंट रीड इट। बहुत सुंदर है, मतलब उन्होंने जिस प्रकार से लिखने की शैली है, वो ब्यूटीफुल, ब्रिलियंट। राइट?
लेकिन काफी वो पुस्तक में रह गया। परंतु गीता को ऐसा नहीं कर सकते। यू कांट जस्ट यूज टू कन्वर्ट पीपल, और यू जस्ट यूज फॉर मेकिंग अ टीचिंग। ये अप्लाइड है, इसमें एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन भगवान ने खुद दिया है। आहार से लेकर सोने से लेकर बैठने से लेकर सब कुछ दिया हुआ है, एंड एम्फेसिस भी दिया हुआ है। he is saying तस्माद योगी भवार्जुन। अर्जुन हर अवस्था में योगी बनो। And because Arjuna is a devotee, the next verse Krishna says, because yoginam api sarvesha. Amongst the yogis does not mean that you stop being a yogi, just become a bhakta. नहीं होगा, केवल भक्त नहीं हो सकता, वो कनिष्ठ ही रहेगा, नवसखिया ही रहेगा, क्योंकि योग नहीं आया उसमें। उसकी हरकतें, उसकी सोच, यू नो अगर वो कुछ पढ़ेगा तो रेडिकल बन जाएगा, कुछ नहीं पढ़ेगा तो ज्यादा और भी रेडिकल बनेगा, संकुचित बन जाएगा। ही विल ओनली सी कृष्ण इन कृष्ण मूर्ति। आई नीड टू गो टू वृंदावन, आई नीड टू गो टू जगन्नाथपुरी, राइट। उसका जो भक्ति विल ओनली बी कनेक्टेड टू समथिंग विच इज प्योरली रिलेटेड टू द the external realities of bhakti yoga. But if he wants to connect deeperly, then when he studies Krishna tattva, bhakti tattva as prescribed by Krishna in the Gita itself, in its entirety, as it is, मतलब पूरा, एक श्लोक इधर का एक श्लोक उधर का नहीं, the entire Bhagavad Gita has to be understood. So once we understand Krishna tattva. तो उस कृष्ण तत्व से जब भागवत पे जाते हैं, फिर वो कृष्ण व्यक्ति है। So Bhagavad Gita teaches व्यक्तित्व of Prakriti, the expansion of Krishna, the extension of Krishna, the knowledge of Krishna. And उधर से जब हम भागवत पे आते हैं, then we understand that Murti, the Madhura, सुमधुर मूर्ति, जब गीता और भगवत गीता का इंटीग्रेशन होके जब कृष्ण को समझते हैं, then you, whatever you do, as long as you are doing, as long as you need to do, as long as your responsibility, तो कृष्ण तत्व में भी कृष्ण देखोगे, और कृष्ण मूर्ति में कृष्ण विग्रह को देखोगे। Right? They are interconnected, they are deeply integrated with each other, so that the legacy of Krishna Tattva is of paramount importance. मैं गारंटी कहता हूँ, जो वृंदावन भागते भर भर के, उनमें से कितना गीता को पढ़ा हुआ है, कितना भागवत को पढ़ा हुआ है। अभी तो वृंदावन में लोग रील बनाने के लिए जाते हैं, राइट, ह्यूज, ऋषिकेश, वृंदावन, राइट। सो when we become विद्यार्थी, रील से हम शास्त्र नहीं सीख सकते। आपको एक क्लासरूम के वातावरण में, हो सकता है कि बाहर बैठना ही पड़ेगा, उपनिषद, राइट, यू हैव टू सिट एट द फीट ऑफ अ टीचर। इसलिए द क्लासरूम शुड बी ऑलवेज लाइक दिस ओनली। ऑफ कोर्स इन द वैदिक सनातन धर्म, क्लासरूम इज लाइक अ सर्कुलर, you know that he's my teacher, my guru, and the teacher know that they are representation of my guru in the form of the student. वो लोग मुझे क्या करेंगे, मुझे मेरे ज्ञान की गहराई को और लेकर जाएंगे, गहराई में। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि, such a beautiful verse. And therefore Gita has to be applied science, not simply converting, which is a transformational reality, not simply a converting reality like a Bible and a Quran. Thank you. Any questions or comment? Hare Krishna, if any devotees have questions, they can unmute themselves. So
we'll stop here if you don't have any questions. Hare Krishna. Hare Meet Krishna. next week. Thank you very much. Yeah, Hare